Yes. So let us continue the chapter Kinetic Theory of Gases and Radiation. Okay. So इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है और उसके एप्लीकेशंस भी हमने कुछ देखे थे और इवन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने देखी थी. यस. ठीक है. तो अभी हमने इसमें इसी चैप्टर के अंदर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है तो वो इसका यूज क्या है और किस तरह से वो आइडियल गैस इक्वेशन के साथ कंबाइन होने से अलग अलग उसके रिडक्शंस हमको मिलते हैं. लेट अस सी. तो सबसे पहली बात कि प्रेशर का जो इक्वेशन हमारे पास है तो वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय 1/3 n into m upon v into c square, where c is the RMS velocity of the gas molecules, right? This can also be written as p is equal to capital M 1/3 into capital M upon v into c square, where capital M stands for the mass of the gas, total mass of the gas, which happens to be the product of number of molecules and mass of each molecule. यहाँ पे ये कैपिटल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और स्मॉल एम मतलब क्या है, ईच मॉलिक्यूल का मास है, और ये कैपिटल एम मतलब यहाँ पे टोटल मास गैस का है. ठीक है ना, टोटल गैस का जो मास होता है तो वो कैपिटल एम है. और यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उससे हमको ये इक्वेशन मिलता है P is equal to 1/3 into rho into c square, where rho is called as the density of the gas. Okay. तो ये तीन फॉर्मूले जो है मतलब तीन फॉर्म्स है एक ही फॉर्मूले के, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं, नो डाउट. इसके बाद हम देख सकते हैं कि इफ यू जस्ट वेट अ मिनट. सो ये तीन फॉर्म्स है. ओके. अभी इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला कभी यूज करना है तो ये हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और जब मास टोटल मास ऑफ द गैस गिवन होता है तो ये हमको यूज करना है, और जब डेंसिटी दिया जाता है डायरेक्टली तो ये हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. ठीक है, ये तो चलो एक कॉमन बात है, सिंपल सी बात है. बट अभी इस फॉर्मूले के मॉडिफिकेशंस भी हम देखेंगे. देखो यहाँ पे अगर ये 3 को अगर उधर लिखे जाते हैं तो बनता है 3p अपॉन रो इज इक्वल टू c स्क्वायर, and we can write that the RMS velocity of the gas molecules C, which is to be given as 3p upon rho. तो ये फॉर्मूला जो है वो RMS velocity से के लिए निकलता है. जो अगर सपोज कोई गैस हमने P इतने प्रेशर पे रखा है और उसका डेंसिटी अगर रो है सपोज, तो ऐसे केस में उस गैस का जो RMS velocity है वो हम निकाल सकते हैं आराम से. तो इसका मतलब देखो सिर्फ प्रेशर और डेंसिटी को यूज करके जान के हम उसका RMS वेलोसिटी निकाल सकते हैं. और इस फॉर्मूला को अगर हम कंपेयर करते हैं द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, if you if you remember in 11th standard you have learned the formula for velocity of sound in air, which is given by v is equal to root of gamma into p upon rho. याद है ये फॉर्मूला, लैपलास करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर velocity of sound in air. So this formula can be derived separately, and if we check this formula and this formula, we see some similarities between these two formula. There is a pressure in the numerator in the both of these formulas, and there is a density there in the denominator in both of these formulae. So there is a connection between the velocity of sound in air at pressure P and density rho, and the RMS velocity of gas molecules at pressure P and density rho. We can just derive that relationship just by dividing this C by V. If we just divide this C and V, then C के अंदर क्या है देखो ठीक से यहाँ पे
तो वो बनता है 3p अपॉन रो, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय v के अंदर क्या है, गैमा इंटू p अपॉन रो, जिसमें से अभी देखो p अपॉन रो जो है वो कैंसिल हो जाता है और हमको बचता है c अपॉन v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 बाय गैमा. That means we can just rearrange this and say that the RMS velocity of gas molecule is always equal to root of 3 by gamma times of v, speed of sound in air. So this is going to be the relationship between the speed of sound in air and the RMS velocity of gas molecules, no doubt. चलो ये एक पॉइंट हो गया जो हमको डिस्कस करना था इस चैप्टर के अंदर. इसके आगे जाके हम वेरियस काइनेटिक एनर्जीज भी निकाल सकते हैं गैस के, क्योंकि इसमें ये जो फॉर्मूला है वो अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इस v को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलता है p इंटू v इज इक्वल टू 1/3 इंटू m इंटू सी स्क्वायर. इवन यहाँ पे भी अगर हम v को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिलता है जो कि हमको pv का वैल्यू मिलता है जो कि 1/3 इंटू n m इंटू सी स्क्वायर के बराबर बनता है. बट अगर एक सीधी बात अगर देखो तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू m इंटू सी स्क्वायर, वेयर c कैन बी रिटन एज अ CRMS, दैट इज द RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. तो उसका स्क्वायर, ये हो गया एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी. अगर हमने इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल N से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हमको मिलता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, which can be written as half into m n into c square. अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है चेक करो एक बार ठीक से. सिंपली ये कि यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है, बस उतना ही डिफरेंस है. तो इसलिए फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना कि इसको काइनेटिक एनर्जी को अगर प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम यहाँ पे 3 को एडजस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3/2 और यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू m n and c square as it is, so that this whole thing will actually become the product of pv here, which can be written as kinetic energy of the molecule, kinetic energy of the whole gas is going to be 3/2 times of pv. So this is actually the formula for finding the kinetic energy of the gas. This is called as the internal kinetic energy of the gas, which is denoted by u in the thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि U को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं और वो इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना बनता है 3/2 टाइम्स ऑफ PV के बराबर बनता है. और इससे ही हमको और एक उसका फॉर्मूला मिलता है, द इंटरनल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी रिटन एज 3/2 इंटू nRT, वेयर n इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T मतलब टेम्परेचर. So इससे सीधे पता चलता है कि the kinetic energy of the gas molecule depends on product of pressure and volume, and it also depends on the absolute temperature of the gas molecule. Okay, तो ये एक बात है हो गई. और इससे ही हमको अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज मिलते हैं. सबसे पहली बात कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो उसके लिए ये v को अगर हम नीचे लेके जाएंगे उधर तो यहाँ पे 3/2p बचेगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर, नो डाउट. देन अगेन अगर हमको पर मोल निकालना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स नीचे लेके जाना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट मोल is going to be actually 3/2 times of RT. This is the kinetic energy per mole. याद रखो, this is the kinetic energy per unit volume. Okay, and if we want to find out the kinetic energy per unit mass of the gas, तो kinetic energy देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द गैस, कैपिटल M से हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये अभी देखो सपोज 3/2 nRT को अगर हम कैपिटल M से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा 3/2 into nRT divided by capital M, where capital M is nothing but n into m naught, where m naught stands for molar mass, and if we get cancel this n from both sides, then we get this total kinetic energy per unit mass of the gas to be simply equal to 3/2 into capital R by m naught into T. And here remember that this R by m naught is also called as the specific gas constant, which is denoted by small r, and hence we get this 3/2 into small r T as a value for the kinetic energy per unit mass. And ultimately
if you want to find out the kinetic energy per unit number of molecules, मतलब per molecule, तो kinetic energy per molecule कैसे निकालेंगे? तो ये जो total kinetic energy है उसको हमको number of molecules से divide करना पड़ेगा, जो बनता है 3/2 nRT, which is to be divided by number of molecules in the gas, which is capital N here. But as we have seen last time in the last lecture, that the number of molecules can be written in terms of number of moles, as number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's number, right? So that this number of moles gets cancelled, and we are left with the total kinetic energy of the gas per molecule is actually 3/2 into R by N naught into T, correct? Here this R by N naught is also called as the Boltzmann's constant. Remember, it's called as the Boltzmann's constant, and it is always denoted by Kb. Remember, so if we denote it by Kb here, then we can get this as 3/2 times of Kb into T as a final value for kinetic energy per molecule of a gas. तो देखो कितने सारे kinetic energies हो गए, देखो ठीक से. सबसे पहला हमने देखा kinetic energy per volume, per unit volume of the gas is going to be 3/2 PV, P only. And kinetic energy per mole of a gas is going to be 3/2 RT. The kinetic energy per unit mass of the gas is going to be 3/2 small rt, or we can say capital RT upon m naught. And ultimately, the kinetic energy per molecule of a gas is going to be 3/2 R by N naught into T, where R by N naught can be replaced by Kb, which is called as a Boltzmann's constant in this way. But all these topics are for monoatomic gas molecule only. Remember, this is valid only for monoatomic gas molecule, okay, not for diatomic or triatomic or diatomic vibrating or triatomic non-vibrating molecules actually. So this theory is developed only for monoatomic molecule here. If suppose we have the different types of molecules like diatomic or triatomic or polyatomic molecule, then in that case we'll have to talk about the degrees of freedom of that molecule. तो degrees of freedom क्या होता है ये भी हमको समझना है अच्छी तरह से. What is degree of freedom? It is denoted by F actually, and और चलो D से भी डिनोट कर सकते हैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली 3 फॉर monoatomic molecule, because a monoatomic molecule can only move along x-axis, y-axis or z-axis, no doubt. But if suppose we have a diatomic molecule, तो diatomic molecule के बारे में क्या होता है? This diatomic molecule can move along x-axis, y-axis or z-axis, but at the same time it can rotate also. तो it can rotate also. ये जो molecule है, ये suppose इस dumbbell shape का होता है, तो वो dumbbell shape का होने की वजह से या तो इस x-axis के about या तो इस y-axis के about वो rotate हो सकता है. Z-axis के about जो उसका जो rotation है, it is meaningless. It is negligibly small. It doesn't contribute any kinetic energy, because its moment of inertia in this case is very, very small. And that's why this z-axis is not considered while finding the rotational kinetic energy. Only the two axes, x-axis and y-axis, are considered while finding the rotational kinetic energy. And that's why we can say that the total kinetic energy of the molecule of diatomic type will consist of 5 terms here. Out of these 5 terms, the 3 terms are concerned with translational kinetic energy, and 2 terms are concerned with rotational kinetic energy. And that's why the diatomic molecule always have 5 degrees of freedom. Remember, उसमें भी diatomic molecule जो है वो diatomic में भी 2 टाइप के molecules आते हैं. एक होता है vibrating diatomic molecule और दूसरा होता है non vibrating diatomic molecule. ये जो डम्बेल शेप से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो एक्चुअली नॉन वाइब्रेटिंग, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है तो उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं. और वी कैन कॉल इट एज अ रिजिड आल्सो. रिजिड मतलब ही नॉन वाइब्रेटिंग, रिमेंबर. बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी हैव अ वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल which can be represented by the 2 spheres which are connected by a spring, so in that case this diatomic molecule can move either in x-axis, y-axis or z-axis. So these 3 translational degrees of freedom will always be there, already be there. But and on the other, at the same time, this molecule will have 2 more degrees of freedom
one is rotation about x axis and rotation about y axis, but the rotation about z axis still is not present because moment of inertia is very small. So these two rotational degrees of freedom will be contributed here. So here we can say that this 3 plus 2 becomes 5, no doubt. In the same way as this diatomic molecule, while non-vibrating diatomic molecule has. But in addition to that, this vibrating diatomic molecule has 2 more degrees of freedom, because the molecule can vibrate also. So when this molecule starts vibrating, then there is a time when it will when this spring will get compressed, and there will be a time when this spring will get just expanded like this. तो इस तरह से ये जो दो पोजीशंस के अंदर ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता रहेगा, और उसकी वजह से उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी दो टर्म्स उसमें ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 ट्रांसलेशनल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 रोटेशनल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एट द सेम टाइम 2 वाइब्रेशनल के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? 7. तो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी देयर फॉर अ वाइब्रेटिंग diatomic molecule. Okay, and even vibrating diatomic molecule is also called as the non-rigid. Actually non-rigid क्योंकि वो rigid नहीं है, it can vibrate, that's why it's called as non-rigid. So in this way we can get the degrees of freedom of different type of molecules in this way. And in case of a triatomic molecule, it matters whether the molecule is actually linear or non-linear और ट्रायंगुलर. तो इसमें होता है ऐसा ना कि अगर सपोज कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अगर लीनियर है, तो लीनियर टाइप के मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिक्स्ड है, बट रोटेशनल के 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे. तो देखो ठीक से, फॉर अ लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक CO2. ओके, CO2 जो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर हम जानते हैं कि कार्बन बीच में है और आजू बाजू में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है. तो अभी इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री का हुआ करता है, जिसकी वजह से उसको लीनियर बोलते हैं. और अभी लीनियर तो वो है, बट अभी इसमें लीनियर होने की वजह से क्या होता है ना कि एक ये घूमने के बाद में अब जब हम बात करते हैं घूमने के बारे में, तो इट कैन नॉट रोटेट अबाउट दिस z axis here because its moment of inertia will be very small in this case, and it can rotate only about x axis or y axis here, and that's why the rotational degrees of freedom जो है वो 2 ही contribute होंगे यहाँ पे. और इसलिए यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो उसके बनते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से, दैट इज d is equal to 5 for non vibrating. But if it is vibrating, then degree of freedom will be 9 because CO2 का हम जब तक कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ये C है और उस तरफ दोनों तरफ O है, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगता है और यहाँ पे भी एक दूसरा स्प्रिंग लगता है, और एक स्प्रिंग जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से ये 2 + 2 मिलके 4 बन जाता है. और इसलिए वाइब्रेशन के केस में ये 5 तो ऑलरेडी रहेंगे, बट यहाँ पे 4 उसमें ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये 9 बन जाएगा, नो डाउट. और उससे भी आगे जाके अगर सल्फर डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, जिसमें एक ऑक्सीजन जो बंधा हुआ होता है 2 हाइड्रोजन के साथ, या H2S की भी बात कर सकते हैं, H2S जिसमें सल्फर जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है. तो मतलब इन शॉर्ट ट्रायंगुलर है वो. तो ट्रायंगुलर होने की वजह से उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो 3 रोटेशनल के और 3 ट्रांसलेशनल के तो फिक्स्ड है, तो इसलिए उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है वो 6 बनता है नॉर्मली बिना वाइब्रेशन के. लेकिन अगर वाइब्रेशन कंसीडर करते हो तो यहाँ पे एक स्प्रिंग और यहाँ पे एक स्प्रिंग, ये दोनों स्प्रिंग्स जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 + 4 मतलब ही वो 10 बन जाता है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 10 इफ इट इज वाइब्रेटिंग, and it will be 6 if it is non-vibrating. In this way, here also in case of linear triatomic molecule, the degree of freedom will be 5 if it is non-vibrating, but it will be 9 if it is vibrating. And it also depends on temperature. ये इतना easy भी नहीं है, इतना बिल्कुल straight forward भी ऐसा नहीं है actually. So degree of freedom is somewhat very complicated concept actually.
sometimes it happens that we expect a degree of freedom to be something, but for the number of reasons, that is temperature and pressure and so on, so the degree of freedom doesn't come out to be that much which is expected, but it varies somewhat from that. So accordingly, and इससे भी आगे जाके अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन ओजोन के बारे में, सपोज ये ओजोन जो है, तो ओजोन के बारे में अगर हम देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है, मतलब 3 स्प्रिंग्स यहाँ पे आने वाले हैं, जिसके कारण अभी वो फिर भी ट्राइटोमिक है, तो ट्राइटोमिक होने की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रोटेशनल के और 3 ट्रांसलेशनल के तो रहने वाले ही है, तो नॉर्मली उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे 6 ही रहेंगे फॉर नॉन वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, बट इफ सपोज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, then its vibration also starts, and that's why in that case these 3 bonds will act like 3 springs here, and each spring will contribute 2 degrees of freedom in the total, and that's why it will become 6 plus 6, that is 12 as a total degree of freedom for this type of molecule. Okay, in general, if we have a polyatomic molecule which is consisting of large number of molecules, or suppose we can say the number of molecules is very large like this, and there are number of bonds between these molecules like this, तो ये किसके बीच में भी बॉन्ड हो सकता है इस तरह से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल इस तरह का सपोज, तो इस केस में होता क्या है ना कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमको एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है कि ट्रांसलेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिक्स्ड है, रोटेशनल के भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स्ड है, क्योंकि अभी ये ट्रायंगल से भी ज्यादा हो गया, polyatomic molecule हो गया, तो it can rotate about x axis, y axis as well as z axis equally, and that's why translational के 3 और rotational के 3 total degree of freedom 6 तो बनेंगे ही बनेंगे मिनिमम, अगर वो नॉन वाइब्रेटिंग है तो ठीक है, नॉन वाइब्रेटिंग के लिए 6 बनेंगे, लेकिन अगर वो वाइब्रेटिंग है तो उस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे, तो 6 प्लस वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी वाइब्रेशनल के कितने होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो यहाँ पे हर एक बॉन्ड जो है या हर एक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे एक स्प्रिंग के जैसा काम करता है, इनके बीच में अगर रिलेशन है तो वो स्प्रिंग के जैसा हो गया, इनके बीच में रिलेशन मतलब वो स्प्रिंग हो गया, तो एवरी स्प्रिंग कंट्रीब्यूट्स 2 टर्म्स इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दैट्स व्हाई जितने भी स्प्रिंग्स मतलब जितने भी रिलेशंस रहेंगे, अगर हम मान लेते हैं f इतने रिलेशंस है, तो अकॉर्डिंगली एवरी रिलेशन कंट्रीब्यूट्स 2 in the degree of freedom, and that's why there will be a 2f contribution of vibration degree of freedom, so degree of freedom of vibration will be 6 plus 2f in this case here. For any type of molecule in general, for polyatomic molecule, the degree of freedom will actually be 6 plus 2f, it is the standard value, so it doesn't matter how many molecules are there, and it doesn't matter how many relations are there, this 6 will be always fixed, तो ये 6 जो है वो फिक्स्ड होगा नो डाउट, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर जो है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ डिपेंड करेंगे, जो कि f अगर रहेगा, तो अगर मान लो 5 रिलेशनशिप्स है, तो उस केस में हमको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5, दैट मींस इट विल बी 6 प्लस 10, दैट इज 16, दैट्स इट, सो लाइक दैट, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी गैस इफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज नोन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पता होना चाहिए, मोलर फार्मूला, और दूसरा उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है तो वो भी हमको पता होना चाहिए, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिमेंबर. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट सी हियर, होता ऐसा है कि कई बार हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस निकालना पड़ता है, याद रखो ठीक से, स्पेसिफिक हीट, गैस को 2 स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम CV से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम CP से डिनोट करते हैं, इसमें भी 2 टाइप आते हैं, एक होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके, देखो ठीक से, ये टेबल हम एक बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, जिसमें स्पेसिफिक हीट तो चलो मेन हेडिंग है नो डाउट, बट अब यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है, और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और उसमें भी होता है एक तो प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल, और दूसरे होते हैं मोलर, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स,
तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल सी एंड स्मॉल cv एंड स्मॉल cv. तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल cv as a principal specific heat here in this way, and this small cp will be the principal specific heat at constant pressure here. And molar का मतलब क्या? तो molar specific heat is always denoted by capital C. तो वो चाहे constant volume पे हो या constant pressure पे हो. तो molar specific heat at constant volume is denoted by capital CV, and here this molar specific heat at constant pressure is denoted by capital CP. Remember. Okay. तो अभी इसमें देखो how it is defined. तो अभी CV कैसे डिफाइन करते हैं? Principal specific heat at constant volume is defined as the total amount of heat absorbed by the gas, means or amount of heat which is required to raise the 1 kilogram of the gas or 1 unit mass of the gas through 1 degree Celsius. So simply we will have to work this out. तो du upon n times of dt, ये उसका लिए फॉर्मूला बनता है. क्योंकि यहाँ पे du क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही चेंज हो सकता है, बाकी प्रेशर वगैरह जो है तो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, इसलिए वर्क डन तो होने वाला ही नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे ये जो बनता है CV इज इक्वल टू du अपॉन सॉरी n नहीं m. m मतलब ही टोटल मास ऑफ द गैस. ओके, सो हियर इट विल बी द टोटल मास ऑफ द गैस इनटू dt. ये फॉर्मूला उसके लिए बन गया. मोलर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं उसको. अभी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी ऑब्टेन्ड टू बी एक्चुअली dq upon m dt, where m is the mass of the gas total again, and this dq is going to be the total amount of heat absorbed by the gas at constant pressure actually, where dq is actually going to be du plus dw. This is the first law of thermodynamics, and at constant pressure we already know that dq happens to be du plus p delta v, where delta v is the change in volume and p is going to be the constant pressure. So constant pressure होने की वजह से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आराम से. और इससे भी आगे जाके p d डेल्टा v जो होता है, तो इस p डेल्टा v को हम n r dt डेल्टा t ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से. और सिंपली अगर ये p dv को अगर ये जो है इसको अगर हम p dv अगर लिख देंगे, dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो इस p dv को आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके n r dt ऐसा भी लिख सकते हैं. एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन इज pv इक्वल टू nRT, but if you differentiate it with respect to temperature, then pressure is p is constant, so it will be taken out, and hence we get this as a p into dv is equal to nr dt as a final relationship, which can be replaced here and get this as dq is equal to du plus nr dt. तो ये अच्छी तरह से याद रख लो. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर. ओके, ये कभी यूज करना है हमको जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तभी हमको ये यूज करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं. ओके, अभी इससे भी आगे जाके हम ये देखते हैं कि CV कैसे डिफाइन किया जाता है. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फिर से du अपॉन n dt, where du is again the number of the change in internal energy of the gas, because अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगा, दूसरा कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है. और बाकी यहाँ पे CP अगर यूज करेंगे तो उस केस में लेकिन यहाँ पे DQ आएगा, क्योंकि जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो इस DQ के अंदर DU भी और ये nRDT भी आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन भी होने वाला है उस केस में. तो इसलिए यहाँ पे हमको मिलता है CP इज इक्वल टू DQ अपॉन n इंटू dt. ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद रख लो. ये पूरा टेबल ही बिल्कुल दिमाग में छाप लो, क्योंकि इससे तुमको 4 रिलेशनशिप्स मिलेंगे. देखो, सबसे पहला रिलेशनशिप तुमको मिलेगा इस CV और CP के बीच में. दूसरा रिलेशनशिप मिलेगा इस CV और कैपिटल CV के बीच में. तीसरा रिलेशनशिप रहेगा CV और कैपिटल CP के बीच में. और चौथा रिलेशनशिप रहेगा कैपिटल स्मॉल CP एंड कैपिटल CP के बीच में. मतलब इन चारों के बीच में रिलेशनशिप्स है. देखो कैसे, क्योंकि अगर हम सपोज ये स्मॉल CV और कैपिटल CV के बीच में अगर रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए ट्राई करेंगे, तो हमको पता है ऑलरेडी कि स्मॉल CV इज ऑलवेज इक्वल टू du अपॉन m dt, बराबर है. बट मास ऑफ द गैस कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स
into molar mass, करेक्ट है? तो यहाँ पे आ जाएगा molar mass into number of moles into dt as it is. But as we know that this du upon n dt becomes capital CV. So we can say that this small cv is actually going to be capital CV upon m naught, which also can be written as capital CV is equal to m naught into small cv. So this is the relationship between capital CV and small cv. In the same way, we can prove that capital CP is going to be m naught into small cp, करेक्ट है? सो ये हमने प्रूव कर दिया है आराम से। और उससे भी आगे जाके ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो उससे हम कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी के बीच में भी रिलेशनशिप डिराइव कर सकेंगे। देखो कैसे, क्योंकि इसको यूज करके हमको सीवी का डी का वैल्यू मिलता है। क्या मिलेगा डी का वैल्यू? तो वो हमको मिलेगा n इंटू सी वी इंटू डी टी, करेक्ट है? और इसको यूज करके हमको डी क्यू का वैल्यू मिलता है। डी क्यू का वैल्यू एक्चुअली रहेगा n इंटू कैपिटल सी पी इंटू डी टी, करेक्ट है? और ये दोनों वैल्यूज अगर हम इसमें डाल देंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे लिए हमारे पास है, ये इसका फॉर्म जो कांस्टेंट प्रेशर के लिए बना हुआ है, तो इसके अंदर अगर डाल देंगे तो हमको मिलेगा, देखो डी क्यू is equal to du plus nr dt. But dq is what? See it here, it is actually ncp dt, right? So here it is going to be ncp dt is equal to du is nothing but ncv dt. So here it is going to be ncv into dt plus this nr dt is kept as it is. So here it is going to be nr into dt. So here if we divide each term by n and dt, then we can see the magic and get that this ndt cancel, here also ndt will get cancelled, and here also dt and n will get cancelled, and we'll be left with simply cp is equal to cv plus r. This is called as the Mayer's relationship. Remember, it is very important relationship between the capital cp and capital cv. And also that if we suppose divide this whole equation by m naught, just check. See here, if we have this equation cp, capital cp is divided by m naught, and here also this capital cv is also divided by m naught, and here this is plus this capital R is also divided by m naught. Then we can see this capital cp upon m naught, as we have just seen that capital cv upon m naught is going to be small cv. So in the same way, we can prove that capital CP upon m naught is going to be small cp, right? So if we use it here, then we get this as a small cp is equal to small cv plus this r upon m naught is called as a specific gas constant, which is also denoted by small r. So this is also called as the Mayer's relationship, which gives us the relationship between the principal specific heat at constant pressure and principal specific heat at constant volume. ओके तो देखो चारों के बीच में रिलेशनशिप हो गया कि नहीं? ये देखो CV है यहाँ पे, इधर सपोज कैपिटल सी स्मॉल CP है, इधर कैपिटल CV है, और इधर कैपिटल CP भी है। तो अभी देखो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, देख सकते हो ठीक से। स्मॉल CP और स्मॉल CV के बीच में रिलेशनशिप क्या है? स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV इज इक्वल टू स्मॉल r। कैपिटल CP और कैपिटल CP के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो देख सकते हो कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इज इक्वल टू कैपिटल R। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो देख सकते हो कैपिटल CV इज इक्वल टू m नॉट इंटू स्मॉल CV, एंड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हो आराम से, दैट इज कैपिटल CP इज इक्वल टू m नॉट अगेन इंटू स्मॉल CP, करेक्ट है? सो ये चारों रिलेशनशिप्स जो है वो तुमको एक ही टेबल में मिल रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है? अभी इसमें एक बात और याद रखेंगे ठीक से कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन CV एंड, ये देखो कैपिटल CP इज इक्वल टू कैपिटल CV प्लस कैपिटल R, ये हमने प्रूव किया, नो डाउट। बट देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज एडियाबेटिक कांस्टेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय गामा, which is nothing but the ratio of capital CP to capital CV, or even we can also define it as a ratio of small CP to small CV as well, no doubt, क्योंकि रेशियो तो सेम ही आएगा, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि कैपिटल CP is nothing but m naught into small CP,
and capital CV is going to be m naught into small cv. So m naught gets cancelled, and we are left with this capital C, small cp upon small cv to be the same ratio, that is gamma, no doubt. So gamma can be defined in any way, no doubt. But अभी यहाँ पे एक बात याद रखो ठीक से कि if we just express this capital CP as gamma into small capital CV, then we can put this value of capital CP here and get this modified as gamma into capital CV is equal to capital CV plus R, करेक्ट है? जो ये कैपिटल CV अगर उस तरफ भेज दिया तो हमको मिलेगा gamma into capital CV minus capital CV is going to be R, जिससे हमको मिलता है CV can be taken common and we are left with gamma minus 1 inside, which is actually going to be R, जिससे हमको मिलता है capital CV is equal to R upon gamma minus 1. This is going to be the relationship between capital CV and gamma. Remember this correctly? Okay, so and this adiabatic constant जो है, तो adiabatic constant is a very important concept because adiabatic constant जो है, it gives us the ratio of the molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume, and the values of this gamma is different for different types of gases. Like if we talk about the monoatomic gas, तो अगर हम मोनोएटॉमिक गैस के बारे में अगर बात करते हैं, मोनोएटॉमिक गैस के बारे में, तो उसके लिए हमको पता है ऑलरेडी, देखो ठीक से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं उसके, देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली. तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से, और ये जो ये हमको पता होना चाहिए कि व्हाट डज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस. तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस सिंपली दैट द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम is associated with the energy of half kT. Actually, it is kBT, where kB is the Boltzmann's constant. But just for the sake of simplicity, we will use it as kT. Okay, so each degree of freedom is associated with the energy of half kT. So what will be the total energy of a molecule of monoatomic gas? It will be 3 times of half kT. Correct है? ये एक molecule का हो गया, no doubt. But एक mole का कितना बनेगा? That should be multiplied with n naught. That is Avogadro's number, so that we can get the total kinetic energy of a mole. Okay, so we can denote it by U here. So U will be equal to 3 by 2 K into T into n naught. But as we know that K is actually R by n naught, right? So if we put this value here, then we can get that R by n naught into n naught. So n naught cancel होके क्या मिलेगा हमको? The total kinetic energy of 1 mole of a gas to be equal to 3 by 2 into RT. करेक्ट है? तो ये एक मोल का हो गया. It is for 1 mole only. If you want to find it out for n moles, then the total kinetic energy of n moles will be actually 3 by 2 nRT, as we have already proved. Okay, so this is the total kinetic energy of the molecule of monoatomic gas. Okay, एक monoatomic gas molecule के लिए जो total kinetic energy होता है n moles का, तो वो इतना होता है, और एक मोल का कितना होता है? ये इतना होता है. This is the kinetic energy of 1 mole, and this is the kinetic energy of 1 molecule here. This is the kinetic energy of 1 molecule here. Okay, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. इससे भी आगे जाके अगर हमको ये जो हमने अभी भी देखा, ये जो फॉर्मूला अभी देखा ना हमने CV का, याद है? What is CV here? ये देखो कैपिटल CV को हमने कैसे डिफाइन किया था? du upon n dt करके डिफाइन किया था. ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एज इट इज, तो देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि CV, कैपिटल CV is actually defined as du upon n dt, which can also be written as capital CV is equal to 1 upon n into du by dt, where du by dt stands for the derivative of u with respect to t. So if we differentiate this with respect to temperature here, then we get this du by dt to be equal to 3 by 2 into nr, and since this CV, capital CV can be written to be equal to 1 by n into du by dt, so we can just put this value here and get this as 1 upon n into 3 by 2 times of nr, so that this n gets cancelled and we are left with capital CV is equal to 3 by 2 into r. Okay, so this is for the monoatomic molecule only, and if we want to find out capital CP,
then we can get it as CV plus capital R. So if we add this R in this 3 by 2 R, then we can get 5 by 2 R, and hence we can get this as 5 by 2 times of R. This is the value of capital CP for monoatomic gas molecule. And at the same time, if you want to find out gamma here, so gamma is going to be the ratio of capital CP to capital CV. So if we replace them here, then we can get this as 5 by 3 as the value of gamma for monoatomic gas molecule. Remember, ओके तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का जो गैमा का वैल्यू है वो 5/3 के बराबर हुआ करता है। ये सब चीजें अगर हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर किया, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम कंसीडरेशन करते हैं, तो हमको मिलता है इस तरह से कि देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमको पता है ऑलरेडी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्चुअली will become 5 times of half kT, where K is the Boltzmann's constant again. So एक मॉलिक्यूल का इतना हो गया, तो एक मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, एंड एक मोल का अगर उतना हो गया तो n मोल्स का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n अगेन। सो इन शॉर्ट क्या है ना कि ये एक मोल का काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसको अगर हम n नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलता है एक मोल का काइनेटिक एनर्जी, उसको हम u से डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट। बट इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट फॉर n मोल्स, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये k और n नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको r बना देंगे, तो इससे वो बनेगा एक्चुअली 5/2 RT, करेक्ट है। एंड देन वी कैन जस्ट गेट दिस फॉर n मोल्स व्हिच इज okay, so for n moles it will become, yes, so ये तो एक मोल के लिए हो गया, the same kinetic energy of a gas for n moles will become 5/2 nRT. See the difference. This is the formula for kinetic energy of n moles of a diatomic non-vibrating gas. Okay, ये non-vibrating diatomic gas molecule के लिए है, okay, जो कि 5/2 nRT बनता है. This is the kinetic energy, internal kinetic energy of the non-vibrating diatomic gas molecule for n moles. Okay, again here if we see the next here, then if we differentiate this with respect to temperature, then we get this du by dt, which is equal to 5/2 into nr. And if we just take this n also in the denominator, then we get this du by dt, and here it is 1/n, which is going to be 5/2 into r only. And this term is called as capital CV, that is the molar specific heat at constant volume. If we replace it by that, then we get this molar specific heat at constant volume to be equal to 5/2 R, which gives capital CP equal to 7/2 R, because we have that CP is equal to CV plus R, and hence gamma will actually be equal to 7/5, which is different from monatomic gas molecule. And if we talk the same thing for the vibrating diatomic molecule, तो वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको ये मिलता है कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 7। तो उसकी वजह से उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बनता है वो बनता है 7 टाइम्स ऑफ हाफ kT, बट दिस इज ओनली फॉर वन मॉलिक्यूल. इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन एवोगाड्रोस नंबर, देन वी गेट इट फॉर द टोटल फॉर वन मोल. तो एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनता है, यू कैन से दैट इट विल बी 7/2 RT, नो डाउट. और n मोल्स का अगर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय n and get it as 7/2 nRT, no problem. And if we just differentiate it with respect to temperature, then we can get it as 7/2 nR. And if we just take this n in the denominator in that other side, then we get this du by dt into 1/n is equal to 7/2 R, and that is also called as the capital CV here. So we can say that this capital CV is actually going to be 7/2 R, which gives capital CP actually to be equal to 9/2 R, and hence we get this gamma to be the ratio of this 9/2 R upon 7/2 R, which happens to be actually 9/7. That is going to be the value of gamma for diatomic non-vibrating molecule. Okay, vibrating diatomic molecule का ये gamma का value हमको मिलता है. और in general for polyatomic molecule,
we can have the degree of freedom to be simply 6 plus 2f, right? 6 plus 2f, and hence the total kinetic energy of a molecule can be obtained to be simply 6 plus 2f multiplied by half kT, right? Half kT. But if we take this 2 common from this bracket and cancel it out, then we get this as 3 plus f into kT. This is only for one molecule. It should be multiplied by Avogadro's number if we want it for 1 mole, and we get this 3 plus f into RT as the kinetic energy of 1 mole here. So 1 mole का kinetic energy हमको मिल गया, no doubt. If you want it for n moles, then we can get this as for 3 plus f into nRT. And if we want to find out the CV value, just differentiate it once and take n in the denominator here, so as to get it as 3 plus f into R, right? And if we add this R once here in this case, then we get capital CP, which is actually going to be 4 plus F into R. And finally, we can get this gamma in general for polyatomic molecule to be the ratio of CP to CV, which is going to be actually 4 plus F upon 3 plus F as a final. So this is the value of gamma for vibrating in general polyatomic molecule. Okay, in general for polyatomic molecule, the value of gamma happens to be this way here. Okay, so in today's lecture, we have seen different ways to find out the degree of freedom of a gas and different type of gas and their degree of freedoms respectively. In the next lecture, we'll try to find out the degree of freedom of mixture of gases. Okay, जब mixture किया जाता है, तो mixture का degree of freedom किस तरह से निकालना होता है, तो वो हम next lecture में देखेंगे. Okay, so thank you all of you. And one more thing,